Hello friends, welcome to our live session for technical discussions. Two important announcements to make, so hopefully let others join also. Okay, we'll start. Two quick updates I'll give, then we'll continue on our discussion also. We'll not for a short time, 10 minutes. We are regularly coming at 7:30. I would request you please join us at 7:30 to for a technical discussion on Python, Tkinter, database applications using MySQL, SQLite, Excel, CSV, many things we discuss. And these are based on this, the tutorials are developed, and the feedbacks from the tutorials also we discuss it here. And in addition to that, you can also raise your questions, not only related to Python. You can ask about PHP, MySQL, PDF generation, web programming, HTML, JavaScript. All these areas also we focus and we develop tutorials. Based on your feedbacks, your discussions and all, we write the tutorials and update it. So you can always we encourage you to ask questions, your doubts, suggestion, ideas. You can post it here or below the tutorials also. So based on that, we respond to it and modify the scripts also. Just waiting, friends, please join. So today we have added one blog post. If you are watching it, if you are already subscribed, you must have got the link. Sorry, the video is not created. Video is not added now. So only the side blog is posted, the detail about. A few days back, we are discussing about our payslip generation script. In that applications, we are discussing various how a salary is calculated based on the different criteria, the salaries and all. So in the discussion it came up that the details or the say HRA, it's not fixed at 30%, it may vary also. And those who are using the app and different location may change the, for somebody the HRA may be 13%, for somebody it may be 20%, something else. So there should be an option or there should be a scope to customize this data. So based on this, when the salary is calculated, okay, one way is everybody has its own salary, plus some global things or settings are to be given also for the entire, which will affect the entire app. Say what should be the employee should get the HRA, what percentage it should get. So all those settings is unique. Those who are using the app, so they will have the option to set their own values. So for that we are discussing and we are discussed that there should be a setting page or setting tab in that where you can set it, how much the percentage of HRA, dearness allowance, DA, how much the percentage it should be, or what should be the number of days in a month to be used based on the for the salary calculation. Say it should be fixed at 30 or it should be 31 days, or it is based on the that particular month, what is the number of days based on that. So for a February it will be 28 or 29, for Jan it is 31st, like that it will be taken. So these all settings we can do it, and all these things when you are discussing, what comes out is the JSON. JSON is the data exchange file, or it can be, you can store some settings in a JSON. Similarly in XML also, JSON is a widely used for data exchange format, so you can use it. So the app will have a JSON file. So in that JSON file, that whatever settings you are you will do it, or you will fix the settings, you will the JSON file will be saved. So the app who is running, while running, the variables will take the data from the JSON file. Say the dearness allowance should be 30%. Who is running it, keep the setting at 30%. So it will be payslip will be, or pay will be calculated based on that. Somebody else using the same app may keep the variable pay or DA at 20%. So for that particular calculation, it will be kept as 20%. So every user who is using the app can have its own customized
data. So we need not hard code the data 30%, 20% like this. So you can just use it. So for that, JSON is important. And to keep that in mind, we are now developing some tutorials on using how in Python we handle JSON, and in the Tkinter window also how we will handle the JSON. For that, we have added one blog post today where by using Tkinter Treeview, and you know the Treeview one more display that we can have a parent child nodes. So it's like your file explorer, the Treeview data. Not that what we have discussed so far is on tabular data. So child and parent nodes also we can develop. So what we have developed the script now is that is a JSON viewer, or it reads you can point to a JSON file and it will give you a JSON viewer. So all the nodes and subnodes will be in a expandable format. It will be available, so you can expand it, see the details. So that demo and okay, namaste Pratik. Serial number 1, employee ID A001, month of salary May 2015. Yes. Okay, you are talking about our payslip. Let me just complete the JSON part, then we will come back here. So what has happened is in that, so reader, JSON reader, you can browse and point to any JSON file in your local system. Then read it will give you you can browse through the JSON file, monitor each node. This is just the beginning. Similarly, you can edit and update the JSON file also. Whereas in our, so say this is just a JSON viewer we have given. You can extend it to some other thing also. In the app, so when we work it, say for a percentage of what should be the variable pay, suppose a fixed salary is 5,000. Some percentage of it is paid as house rent allowance, or some allowance is paid. Say you will be given a slider where you can slide it from 10%, 20%, 30% up to 100%, because you can't go beyond that. So whatever the setting you give, whatever the slider you point, based on that the JSON file will be updated. Once you update it, that particular JSON file will be updated, and that data, while calculating the payslip, that value, instead of taking a fixed 30%, that particular variable data will be taken for the payslip calculation. So that way what happen, user can customize it. Even many other settings can be customized, look and feel, background color, font color, many things can be customized. So there you can will set a JSON file, say the background of the app, we can set a hex color, you can give a color picker also. User can pick a color, and based on whatever the color, the app will take the background color will change. So that is how the settings will work, and these settings we can store it in a JSON file. That's the idea. Is the blog is updated. Let me just show you once, then you can just let me take out just a minute. I will show you that particular one. Is Tkinter, then Tkinter, now that is Treeview, JSON viewer. I'll show you the particular one. Yeah, here it is. Just to wait. Yeah. Sorry. So let me just close the other apps. Hope you can see this now. This link is there in the description. You can just check that. The GUI-Based data viewer, we call it. These are all this is the image only. So you can expand it and collapse it like our file browser. So the student table we have used it. So the entire breakup of the code is given. So here you can copy it. At the top you will get a link also to download a sample JSON file. So you can entirely code, you can copy it. Study this. So here, even if you want to, what is the basic of JSON also, you can click these links, JSON.
So you can go there and see how what is the basic Python, how Python handles JSON files. So hope this will be useful to you, and most likely tomorrow, let me just close this one. Okay, fine. So this is how your setting file you can create it along with every package or application. So this, once you will study that, create a nice tutorial or a video, then whatever in future we develop the app, we will just connect one such a module which or a tab which gives the site settings. So user can customize it based on their own requirement. I hope this tutorial tomorrow I should able to upload it. Let me try. And once again I request you, please hit the like buttons and subscribe also to our channel and press the bell icon, so you'll get all the notifications, and we are frequently adding the tutorials. Now let's see what Pratik is saying. Monthly basic pay plus DA in a month 31. Fine. Okay. Pratik, you are not clear what you actually want. Pay in the pay band 286. Fine. It's 286 only. You want some more component to be added there. We'll include that in the next version 2. We'll add that. We'll have the sorry. We'll have that setting one. So you can set the how much you want to pay extra. Okay. In a month 31, grade fair for date 2. Okay, fine, that can be added, no problem. This grade pay, what you are insisting on grade pay. Okay, but how you plan to keep the how you will decide what grade it is, and how this 1300 is across all the employees, or it varies from employees to employee grade pay, that you must specify. Now how you arrived at grade pay 210? Say you build the logic first. Say you have 10 employees, 2 employees in grade 1, 2 employees in grade 2, 2 employees in grade 3, like that. So do you want to give grade pay each employee same, or you want to give a higher grade means higher grade means slightly more, next grade slightly more, like that. So in that way, freeze the logic. So once you freeze the logic, you know what way the salary structure will be, then accordingly the logic can be prepared. It's not clear to me what you are. ठीक से आप बताइए मेरे को क्या लॉजिक होना है. मैं कल भी बोला था, आप वो लॉजिक लिख के मेरे को दीजिए. कैसे आप ग्रेड पे से कैलकुलेट करेंगे, बेसिक पे और ग्रेड पे का बीच में कैसा डिफरेंस रहेगा, वो सारे चीज आप अगर करेंगे. लॉजिक तो किसी भी तरह बना सकते हैं. फ्रेंड्स, this JSON string, JSON what हम लोग अभी जो what we are discussed now will continue develop tomorrow. Hopefully I will able to add it. 84 कहाँ से आया? ग्रेड पे माइनस 84 कहाँ से आया? ऐसा नहीं होगा प्रतीक. आप पूरा एक डिटेल लिख के दीजिए, क्या क्या कैसे आप बनाना चाहते हैं, आपको पूरा आइडिया होना है. बेसिक पे है, ग्रेड पे, आप ग्रेड पे बोल रहे हैं, ग्रेड पे फिक्स होना है या ग्रेड पे वेरिएबल होना है, वो डिसाइड करिए. ग्रेड पे का लिंक कैसे होगा, यहाँ तक होने के बाद ही बेसिक पे कंप्लीट होगा, पता नहीं चल रहा है. बेसिक पे तो फिक्स रहता है.
बेसिक पे हमेशा फिक्स्ड है, उसका तो चेंजेस नहीं होता है। आप अगर डे वाइज कर रहे हैं या ग्रेड पे ऐड करिए। आप पूरा मुझे लिख के दीजिए, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं कैसे आपको लॉजिक बताऊं। आप पूरा लिख के दीजिए, देन हमको कहाँ से आया 370 370 बेसिक पे हुआ, वो कैसे आया? 2 दिन का, ठीक है, ठीक है। ओके, प्रॉब्लम क्या है? ठीक है, आप पूरा डिटेल्स में एक बना के दीजिए, उस हिसाब से मैं लॉजिक इंक्लूड कर लूँगा। एंड इस बार सेटिंग्स में रहेगा वो जो आपका, हाँ पाइथन किंटर से ही, किंटर से ही होगा। कैलकुलेट करने से वो सारी चीज़ किंटर से ही होगा। ठीक है, आप पूरा मुझे एक ऐसे एक एक करके नहीं होगा, मेरे को पूरा समझ में नहीं आ रहा है। आप लिख के डिटेल में क्या लॉजिक है लिख के दीजिए। और कुछ आइडियाज़ है? किंटर इज ए जस्ट ए इंटरफेस ओनली, प्रोग्रामिंग तो पूरा पाइथन में ही होगा। और कुछ है फ्रेंड्स? ठीक है प्रतीक, आप मुझे पूरा डिटेल में लिख के दीजिए, देन मेरे को समझ में आएगा। मैं अभी समझ नहीं पा रहा हूँ आप क्या लॉजिक बनाना चाहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग, ठीक है। एक सैंपल दीजिए ना, कितना कैसे आप 5740 एक लिख के एक सैंपल दीजिए। कैसे आया ये फिगर, क्या क्या ब्रेकअप आप लिए, कैसे ब्रेकअप लिए, एक पूरा पूरा एक एक करने, एक ही ये में लिस्ट दीजिए। सो फ्रेंड्स, यही है, हम लोग रेगुलरली 7:30 को ये टेक्निकल डिस्कशंस करते हैं बस। ठीक है, ग्रेड पे कैसे कैलकुलेट किया आप? ठीक है फ्रेंड्स, हम लोग यही टेक्निकल डिस्कशन करते हैं। यू कैन जॉइन अस एट 7:30 रेगुलरली for 10 minutes. I come give you the updates what you have added and what, and take some feedbacks. 1300 रुपया ग्रेड पे कहाँ से आया? तो हम लोग यही आपसे, वी टेक द फीडबैक्स फ्रॉम यू एंड अकॉर्डिंगली वी मॉडिफाई द स्क्रिप्ट ऑल्सो। सो आई होप यू आर ऑल एंजॉइंग दैट वन। माई रिक्वेस्ट इज प्लीज हिट द like button and join us, subscribe to us also. अरे आप बनाना 1300 रुपीज़ कहाँ से आया? ग्रेड पे एक फिक्स रहता है बेसिक जैसा, या वेरिएबल है, डे वाइज कैलकुलेटर, वो तो बताइए। आप बिजनेस लॉजिक नहीं देने से मैं नहीं कर पाऊंगा। कैसे मैं समझू क्या आप सोच रहे हैं? आप पूरा दीजिए, ग्रेड पे इज, अच्छा ठीक है।
ओके 1300 अब टाइम टू टाइम चेंज होगा। ये सारे एम्प्लॉय के लिए एक ही ग्रेड रहेगा या ग्रेड एवरी एम्प्लॉय का डिफरेंट ग्रेड रहता है? अभी बेसिक पे के एक ही अमाउंट है, उसको दो पार्ट रहेगा और क्या, एक ग्रेड पे रहेगा एक बेसिक पे रहेगा। मेरा क्वेश्चन का सीधा ये सबका कांस्टेंट रहेगा, डिफरेंट डिफरेंट, ठीक है। तो और एक कॉलम रहेगा ग्रेड पे का, ओके ठीक है। नेक्स्ट टाइम यही ग्रेड पे एक ऐड करेंगे, ग्रेड पे ऐड करेंगे। तो ये आप क्लियरली बताइए, ग्रेड पे सबका डिफरेंट, मैं पूछने आप डिफरेंट डिफरेंट रहेगा, ये चीज़ आपको पूरा बिजनेस लॉजिक आ जाना है। सबका ग्रेड डिफरेंट रहेगा, ग्रेड को फिर जब सैलरी में ऐड करूंगा तो वो वेरिएबल मीन्स डे वाइज कैलकुलेट करना है या फिक्स्ड रहना है, वो भी क्लैरिटी रहना है। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, इधर ही ख़त्म करते हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, हिट द लाइक बटन, थोड़ा फ्रेंड्स लोगों को भी, हाँ ठीक है ओके, वो अपडेट करेगा। फ्रेंड्स लोगों को भी बोलिए ज्वाइन करने के लिए। हम लोग वी आर एवरी डे 7:30 वी आर ज्वाइनिंग एंड डिस्कसिंग दिस टेक्निकल इश्यूज एंड ऑल based on tutorials. Please tell your friends also to join, subscribe and like, hit the like button so you will get all the notification. अच्छा ठीक है यार, ये चीज़ आपको बोल, ग्रेड पे डिफरेंट होना, ये चीज़ बोलना है ना, मैं पूछने से आप बताते हैं, मेरे को कैसे मालूम होगा आपको क्या। आपका रिक्वायरमेंट पहले एक लाइन लिखिए, पूरा रिक्वायरमेंट एक लिख के रखिए, लिख के मेरे को पोस्ट करिए, इधर ही चार्ट में भी पोस्ट करिए क्या रिक्वायरमेंट है आपका और कैसे कौन सा चीज कैसे कैलकुलेट होगा, एक एक करके नहीं, एक ही साथ सब कुछ। प्रयागराज में संगम में स्नान के, अरे ग्रेट है, मैं सोच रहा था इस बार आऊंगा बोल के, आ नहीं पाया। एक फोटो भेजिए मेरे को, कॉन्टैक्ट अस में लिंक में भेजिए। मैं सोचा था इस बार मेरा ट्रैवल व्लॉग के लिए जाऊंगा, लेकिन थोड़ा पर्सनल प्रॉब्लम हो गया, मैं नहीं जा पाया। इस बार शायद नहीं हो पाएगा। उम्मीद है अच्छा पे आप एंजॉय कर रहे होंगे। लास्ट ईयर में देव दीपावली में बनारस में था, काशी में देव दीपावली, बहुत भीड़ था। इस बार पूरा प्लान करके रखा था लेकिन नहीं हो पाया इस बार शायद नहीं होगा। प्रयागराज में अच्छा है, आप हम लोगों के लिए भी प्रार्थना करिए, थोड़ा लगाइए डुबकी। ठीक है फ्रेंड्स, थोड़ा बिजी हूँ, फिर ज्वाइन करूँगा कल, फिर मिलते हैं 7:30 को। थोड़ा लाइक एंड सब्सक्राइब बढ़ाइए एंड टेल योर फ्रेंड्स ऑल्सो टू ज्वाइन। So regularly we are coming online at 7:30 and watch our tutorials. Let me know how you feel. सभी आए हैं ओके ग्रेट, हैव ए गुड टाइम, एंजॉय करिए। मैं तो मेरा पूरा प्लान करके रखा था, मैं फिर काशी जाके, काशी से फिर प्रयागराज जाके रिटर्न, बट हो नहीं पाएगा, मेरे को नहीं हो पाएगा। याद रखिए सब कुछ ठीक ठाक होने से, इस बार भी जो मैं लास्ट ईयर पुष्कर से आया था उधर, प्रयागराज नहीं, मैं काशी में, बनारस में जो देव दीपावली है, कार्तिक पूर्णिमा का डे, उस दिन में था उधर, तो बहुत ही भीड़ था। वो बोटिंग किया था, काशी विश्वनाथ मंदिर में हमको 4-5 घंटा 6 घंटा लग गया था दर्शन के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, thank you for watching. Please tell your friends also to join, then we can have a useful discussion. नहीं मेरे को अभी निकल नहीं पाऊंगा मैं थोड़ा फैमिली पर्सनल प्रॉब्लम है, मैं बताऊंगा बाद में आपको, मेरा थोड़ा पर्सनल प्रॉब्लम है, मैं अभी निकल नहीं पाऊंगा। जस्ट 10 दिन पहले मेरा प्लान था जाने के लिए, लेकिन अभी निकल नहीं पाऊंगा। ठीक है, हमारे लिए आप भी थोड़ा पूजा कर लीजिए उधर।
बट अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो मैं इस बार अक्टूबर दिवाली वो टाइम में फिर जाऊंगा. लास्ट ईयर था उधर, इस बार फिर जाऊंगा. ओके फ्रेंड्स, मैं थोड़ा काम है मेरे को. 15-20-25 मिनट्स हो गया. सारे ट्यूटोरियल्स एंजॉय करिए. आपका क्या आइडियाज़, कुछ सजेशंस है तो दीजिए. मैं कोशिश करूँगा ज्वाइन करने के लिए, अपडेट करने के लिए ट्यूटोरियल्स को. एक ब्लॉग डाला हूँ, और मेरा एक साइट में सब्सक्राइब भी करिए. न्यूज़लेटर का एक लिंक है. मैं ज़्यादा न्यूज़लेटर नहीं दे पा रहा हूँ, बट अभी सोच रहा हूँ आगे रेगुलरली न्यूज़लेटर पोस्ट करूँगा. रिक्वेस्ट रहा. थैंक यू प्रतीक. कुछ फ़ोटो मिलने से भेजिए, देखेंगे कैसे आप ना ये पूजा वूजा किए. बहुत अरेंजमेंट किए हैं उधर. ठीक है, मेरा बैड लक है इस बार. ओके फ्रेंड्स, thank you for joining. Please join 7:30 tomorrow also, same time, and tell your friends also to join. Please hit the like button and subscribe to our channel to get all the updates. Thank you friends. Thank you for watching.